Rohit Sharma. Malab, this petition has been preferred against the tender dated 17th of August 2023. Against? A tender issued by the respondent on 17th of August 2023, my lords, which is at page number 214. 17th of August, this month itself. Who are you? The issue is, Malab, may just allow me to give you a brief background of the matter. In the year 2016, the respondent issued a tender for construction of certain EWS. कहाँ से आए हो तुम? मैं भोपाल से. देखो ऐसा है, हाई कोर्ट में बहस कर रहे हो ना, ये ना तो दीवानी कोर्ट है ना तहसीलदार की कोर्ट है, हाई कोर्ट में बहस कर रहे हो. जब जज कुछ सवाल पूछता है तो उसका पहले जवाब देना पड़ता है. हाँ. बहुत जल्दी में हो नहीं, तो अभी निपटा दें तुम्हारा केस, हम जल्दी कर दें मतलब. और बहस करना चाहते हो तो पहले सवाल पूछो, समझो, फिर आगे बढ़ो. ये प्रिज्यूम करके मत चलो कि जहाँ तुम कोर्ट को कंट्रोल नहीं करोगे, नहीं सर, है ना, और ना तुम कोर्ट को समझाओगे कि आप मेरी बात पहले समझिए उसके बाद हम सवाल पूछिए. नहीं, ऐसा नहीं है. वो ये आज की नई जनरेशन की ये फितरत है. अभी तो ये तो अच्छा हुआ फाइल लेके आए हो, और लोग होते तो मोबाइल फ़ोन लेके आते और उनसे कोई प्रोविज़न के बारे में पूछ लो तो वो प्रोविज़न नहीं बताएंगे. वो कहेंगे हमारे पास केस लॉ है, आप केस लॉ देख लो. और जब केस लॉ जिद करेंगे, पढ़ने की बात आएगी तो वो प्रेसिडम पढ़ेंगे जो बाबू बनाता है. तो ना तो जजमेंट का रेशियो पता है, ना प्रावधान पता है, लेकिन जिद रहेगी कि साहब हमको तो आप सुनिए इसी प्रेसिडम के आधार पर. और वो ऑर्डर दिए चले, हम यहाँ से हम आपकी बकवास सुनने थोड़ा आए हैं, हम तो तक मुकदमा बहस करने आए हैं. अब आप हमको आप जो हम कहें वो समझो, हमको ऑर्डर दो. ये टेंडेंसी है आजकल नए वकीलों की. फैक्ट्स के बारे में कोई मतलब नहीं जानना वालने का. जो क्लाइंट ने कहा वो लिख दिया, जो रिलीफ उसने कहा वो लिख दी, और कोर्ट से उम्मीद ये करी कि जो रिलीफ हमें लिखी है वो देते हो कि नहीं तुम. And this is the last court who will accept this modus operandi of advocates. So this is not the way to address the court, and particularly in writ jurisdiction, and that too in tender matters. I'm sorry, I did not. And therefore you have to be very cautious. You are on a very thin line. And unless if you do not answer the question of the court and straightway want to get into the merits of the dispute, then you are sadly mistaken and you harbor a wrong notion about the scope of interference. Because unless you understand the scope of jurisdiction, you cannot decide your roadmap for arguments. मैंने सवाल पूछा, ये आप हैं कौन? सर मैं पेटिशन वाली बात. मैं कौन हूँ? मैं आदमी हूँ. अरे आदमी तो हो तुम. सर मुझे जब तुमसे पूछ रहे हैं ये, अब हिंदी में बात करते हैं तुमसे, कौन तुम मतलब? साहब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं बिडर हूँ. नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ जिसको ये रोड मिला था, ये काम मिला था पहले. मेरा काम टर्मिनेट हो गया था और रिमेनिंग काम के लिए नया टेंडर इशू हुआ है. तो उसके लिए ये बोलोगे साहब आई एम अ टेंडरर who was given a contract, the contract has come to an end, for the remaining work new tender has been issued. Yes. ये बोलना चाहिए आपको. हमने सवाल पूछा, आप I have just given me 5 minutes, I will brief the whole matter. शुरू कर दिया आपने. इसका मतलब you are not the participant in the tender. Yes. One thing is clear. Yes. That you are not the tenderer in the tender at issue. Yes. That is one thing. Now why should we interfere? My lord, because this tender which has been floated. And if tender has been floated, yes, and you have any grievance, yes, against that, yes, then you file a civil suit. Why writ court? Because tender is issued for construction of remaining road. Yes, remaining construction. Now if there is any, is it a statutory contract?
It's a government contract, arbitration tribunal. So it is a statutory contract or not? Yes. It is, my lord. How? Under which law this contract is entered It's a into? works contract under the So arbitration. it is not a statutory contract. It's a pure civil contract. There is a difference between the two. Statutory contracts and Works contract. not works contract, the civil contracts. Now you will ask me which are the contracts which are statutory. Now where under Electricity Act, when there is a contract for supply of high tension line, Yes. that's a statutory contract. Where under the Act, the authorities are empowered to execute an agreement for the purpose supply of high tension lines. Whereas this is the open tender for construction of road, Of certain pure civil matter. Yes, it is, my lord. but Then merely because the new tender has been issued, why should we interfere? Unless you can show your existing legal right which could be enforced, Yes, my lord. I'll just give but you. not the civil right at common law. Absolutely, my lord. What is the legal right you have Yes, my lord. that they should not go for fresh tender? Yes, my lord, first and foremost, this is a contract with respect to construction of certain buildings which we did not do. The moment our work was terminated, they had issued a new tender. In the termination order, they mentioned that आपने जितना काम करा है उसको मेजर करेंगे, उसका फाइनल बिल बनाएंगे, उसके बाद आपका नया टेंडर हम फ्लोट कर देंगे. मेरा सर ग्रीवेंस यहाँ पे ये था सर, इन्होंने मेरा जो काम है आउट ऑफ 62. Then you raise a dispute सर मैं एक मिनट before the अधिकरण अधिनियम. सर इसमें वर्क्स आर्बिट्रेशन मध्यस्थ अधिनियम में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है सर. तो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज इशूड बाय एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश is falling under the So definition of works contract. therefore, this contract issued by whom? It's the municipal council Vidisha, which is Ah. a works contract. Then according to the definition. if you are not covered Yes. under the Madhyastham Adhikarana, My lord. No, Then- I am covered. I am then- covered. I have then- I then you already go approached there. them. My lord, just bear with me 1 minute. Hmm. I am already covered there. In fact, मैं जैसे ही termination order हुआ था मेरे खिलाफ, I had come before my lords only. So my lord directed me to approach the arbitration tribunal under the component dispute resolution clause. I had done so. so it is pending there. Yes, it is pending there. Then सर इस बीच में क्या हुआ सर, इन्होंने जो टर्मिनेशन ऑर्डर है, इनफैक्ट जो आपका ऑर्डर है हाई कोर्ट का लास्ट ऑर्डर जो उसमें भी उससे छोड़िए, हाँ. आज की तारीख में डिस्प्यूट वहाँ पेंडिंग है ना. सर मैं एक मिनट, जो मेरा डिस्प्यूट जो पेंडिंग है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटम द मनी दैट आई हैव टू क्लेम फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. द इशू फॉर व्हिच आई एम बिफोर माय लॉर्ड इज समथिंग डिफरेंट माय लॉर्ड. It's a clear cut issue wherein an arbitrary action has been exercised against me by the respondent. The reason being, my lord, I'm saying so क्योंकि इन्होंने क्या करा, टर्मिनेशन ऑर्डर में लिख दिया कि आपका जितना वर्क है हम मेजर करके आपको कर देंगे. अब सर यहाँ हो क्या रहा है, 10 किलोमीटर का रोड है सपोज, मैंने 8 किलोमीटर बनाया कि नहीं बनाया ये मेजर ही नहीं कर रहे हैं. और तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? सर मैंडे में से क्यों? दी ओनली You go and shoot for declaration. WP number 22465 of 23. Petitioner, a civil contractor, is before this court taking exception to the fresh tender issued for construction of remaining road of कितने किलोमीटर्स की है? नहीं सर, रोड का नहीं काम, मैं तो एग्जांपल दे रहा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ईडब्ल्यूएस. तो आप फैक्ट्स बताओ. आई एम डिस्कसिंग योर पिटीशन. The facts are that we were awarded a contract for construction certain EWS and LIG houses. हाँ. 62 करोड़ में से 51 करोड़ काम ने कर लिया था. और रिमेनिंग वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, रिमेनिंग वर्क के लिए उन्होंने न्यू टेंडर फ्लोट कर दिया. हाँ. तो इस न्यू टेंडर के देखिए, फ्लोट होने से petitioner, a पहले civil contractor, is before this court taking exception to the fresh tender issued by respondent municipal council Vidisha for award of contract to construct lower income group yes sir, LIG Lo- houses and EWS houses. and EW houses. Full stop. Earlier, an contract was awarded to the petitioner for construction of such houses of the value of 62 crores. 62 crores. Full stop. On his own showing, petitioner has only done work of the value of 52 crores. Full stop. It appears some dispute arose between the contractor, petitioner contractor, and the respondent municipal council.
As a result, the petitioner has already approached the Madhyastam Adhikaran. Well, we've approached we've invoked the dispute resolution clause. Because Petitioner invoked the dispute resolution clause and ultimately filed a dispute yes. before the Madhyastam Adhikaran. Full stop. This case is pending before it. No, my lord, all due respect, we've just, actually in the dispute resolution clause, there are three bodies. First, we have to approach the competent authority. Where have you gone so far? We have gone before the competent authority, the 45 days are over. Now we will approach the second appellate authority. Thereafter, we will have to go to the tribunal. Has raised a dispute under the under dispute resolution clause number 12. 12. Full stop. Subject matter is still pending before the under said clause. So, next, through this petition, petitioner prays for a writ of mandamus restraining respondents from proceeding with the impugn NIT number 5449 unless the work completed by the petitioner is measured and final bill is prepared. Full stop. As a matter of fact, regard being had to natural relief sought for, we are of the view that no existing legal right, we are of the view that relief claimed for, you say देखो on regarding had natural relief claimed, we are of the view the same in fact and in effect is in the realm of civil rights at common law, for which petitioner cannot claim a writ of mandamus. Instead, if so advised, either petitioner may approach the tribunal where dispute related to payment of work done by the petitioner is pending, or a forum available to him under common law remedy. Consequently, we decline to interfere in this petition and we can interfere in the instant matter. Stop. This court hopes and trusts that the forum chosen by the petitioner, if any, shall be well advised to look into the disputed questions of facts and address the issue in accordance with law. ऊपर एक और डाल देना, is the realm of the factual dispute. फिर लिखना चाहिए.